Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 3, that is human health, and today we will discuss about sources of common foods, and today is 7th lecture. So my dear students, let's recap what we did in the previous lecture. For that, listen to the questions very carefully, pause the video and then answer them. Which vitamins make our bones strong, and from which food we gain it? Very good. So my dear students, हमारी bones जो है ये कैल्शियम से, different vitamins, vitamin D जो है ये इनको strong बनाता है, और different जो proteins हैं, vitamins हैं, पानी है और fats जो हैं ये हमारी healthy body के लिए बहुत ज़्यादा important है. So now is the time for an activity. For activity, show students given pictures and ask them which type of nutrients they get from their favorite food source. So my dear students, आपको different मैं pictures दिखा रही हूँ. अपना favorite food group जो है उसको choose करें. I like fruits more, और मुझे इनसे vitamins जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं. So select your favorite group और बताएं कि आपको उससे क्या मिलता है. Very good. So now we will move forward towards today's lesson. Sources of common foods. Different जो foods हैं उनके common sources क्या हैं, उनसे हमें क्या मिलता है. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. Eat of the good things which we have provided for you. अल्लाह ताला ने जो हमें अच्छी चीज़ें provide की हैं, हमें चाहिए कि हम उनमें से अच्छा जो खाना है उसको जो है इस्तेमाल करें, हलाल रिस्क को जो है वो तलाश करें. So my dear students, in today's lecture, student will be able to identify common food sources included in balanced diet like fruits, vegetables, grains, milk, meat group. So some pre-reading questions before the reading. Name some vitamins. A, B, C, D, E and K. Very good. What are their sources? We get vitamins from different fruits and vegetables. Very good. Now is the time for reading. So quickly open sources of common food in chapter number 3, Science 4 books. Very good. I hope everybody has opened the pages. Now let's start reading. Put your fingers where I will read. Sources of common food. The most common food group are given below with their foods. Grains. It is the largest food group. It includes oats, barley, wheat, etc. This food group is mainly the source of carbohydrates. So my dear students, जो सबसे बड़ा ग्रुप है, फूड ग्रुप है, वो है ग्रेन्स का, और इसमें चावल, दालें, आटा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं, और ये सबसे बड़ा फूड ग्रुप है. Then next comes vegetables. It is the second largest food group, which includes onions, tomatoes, chilies, etc. This group is mainly the source of vitamins, carbohydrates and minerals. So grains के बाद दूसरा बड़ा ग्रुप जो है और जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, that is vegetables, और ये भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और vitamins जो है वो प्रोवाइड करते हैं. So these are grains, they have carbohydrates in them. So these are vegetables and they have carbohydrates, vitamins and minerals in them. So next is dairy. This group includes milk and other related products. These are sources of proteins and lipids. So my dear students, दूध से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि चीज़, मिल्क, योगर्ट, they all are dairy products, और इनके अंदर जो है हमें इनसे क्या मिलता है, हमें इनसे प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलते हैं. ये हमारी बोन्स को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज फ्रूट. It includes all types of fruit like apples, oranges, berries, etc. This group is mainly the source of vitamins, carbohydrates and minerals. So my dear students, इसके बाद fruit group आता है जिसके अंदर mainly vitamins होते हैं, कुछ carbohydrates और minerals भी इसमें present होते हैं. So जितने भी fruits हैं वो इस group में आते हैं. So dairy products are the things that are made from the milk and they have proteins, lipids in them. Then comes fruits. They have carbohydrates, vitamins and minerals in them. Then next is meat. So from meat, this group includes chicken, mutton, beef, etc. Fish also. These are sources of proteins and lipids, and they help in building the muscle of our body. The next come pulses, यानी कि दालें. Pulses also have a big share in our diet.
They also provide us with proteins. Pulses include lentils, dried beans, peas and chickpeas. So my dear students, जो दालें हैं, pulses जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट के अंदर, और ये हमें प्रोटीन और जो है प्रोवाइड करती हैं, और इनके अंदर लेंटिल्स, ड्राइड बीन्स, पीज और चिकपीस जो है वो मौजूद होते हैं. So my dear students, here is meat. It provides us proteins, lipids, and these are pulses. They provide us carbohydrates and proteins, and they are very important for our body. Now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So my dear students, write down your name and your roll number, then match the food with their food groups. ठीक है, आपको यहाँ पर डिफरेंट फूड्स दिए हुए हैं, आपको इनको करेक्ट फूड ग्रुप के अंदर डालना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कम्स मीट, तो आप इसको मीट के साथ मैच करेंगे, एंड देन ग्रेन्स, और इसको आप अकॉर्डिंगली जो है वो ग्रुप्स के साथ मैच करते जाएंगे. द नेक्स्ट पार्ट इज ड्रॉ अ बैलेंस्ड मील यूड लाइक टू ईट, फॉलो द लेबल्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बैलेंस फूड जो है वो ये होता है, आपकी प्लेट के अंदर इतने इतने पोर्शंस जो हैं वो हर चीज़ के होने चाहिए. तो यहाँ आप अपनी पसंद के फ्रूट्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ ग्रेन्स, यहाँ वेजिटेबल्स और यहाँ मीट, और यहाँ पर आपका डेयरी आ जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ें आ जाएंगी जो आपको पसंद है. सो आपको इस हिसाब से ड्रॉ करनी है और उनको कलर भी करना है कि आप एक प्लेट में कितनी चीज़ें जो हैं वो खा सकते हैं, या एक सर्विंग में आपको कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी चाहिए. सो दिस इज़ हाउ यू विल मेक योर बैलेंस डाइट प्लेट. Okay, so complete it, pause the video and finish it. I hope everybody has finished it. Now we will move forward towards the evaluation. Which food group is the main source of carbohydrates? Grains, very good. And what does meat provide us? Proteins, excellent. So my dear students, now quickly note down your homework. For homework, you will go on page number 50 and you will do question number 8 from section number B. And this is your homework. Now let's wrap up today's lecture. What we have learned today. Today we learned that grains are the sources of carbohydrates. Fruits and vegetables are sources of carbohydrates, vitamins and minerals. Dairy products and meat are sources of proteins and lipids. So my dear students, next is pulses are sources of proteins. My dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.